So right now, Team South Delhi Flows is in Panchsheel Park, and we are here to showcase a fabulously built modern property by one of the top builders of South Delhi, that is Metro Buildtech. So it's a 500 square yard basement ground duplex already sold, but we are here to cover and showcase this beautiful property for the viewers of South Delhi Flows, as we have many more options like this being made by this super premium branded builder Metro Buildtech. So let's start this video tour. So if you buy a 500 square yard or a 600 or a 800 square yard basement ground duplex in South Delhi, guys, this is the best part. Not only you get this long elongated driveway that can easily park 4 to 5 cars or even more in bigger sizes, but also apart from this kind of driveway, you also get a double height porch over here, a separate entrance, this kind of beautiful, good height, a double height entrance, and a private lift, a private elevator, a private staircase. सो हमें साउथ दिल्ली फ्लोज में बहुत सारे कॉल्स आते हैं लाइक लोग कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंट ब्रांड न्यू इंडिपेंडेंट होम्स चाहिए एंड वी टेल देम दैट साउथ दिल्ली के अंदर या तो नए फ्लैट्स मिलते हैं या फिर पुराने घर मिलते हैं, बट एक ऑप्शन इस तरह की भी होती है कि आप एक बेसमेंट ग्राउंड डुप्लेक्स ले सकते हैं जिसमें ऑलमोस्ट आपका सब कुछ प्राइवेट होता है. तो इस तरह के डुप्लेक्स में जिसमें आपको लिफ्ट सेपरेट है, एंट्रेंस सेपरेट है, इस तरह के डुप्लेक्स के अंदर रहने का मतलब है कि आप एक इंडिपेंडेंट विला काइंड ऑफ यूनिट में रह रहे हैं. So this is the exclusive entrance, a very solid, beautiful door. It has this amazing 3D pattern over here, जिससे कि काफ़ी elegant लग रहा है. And this is your private exclusive entrance for this kind of basement ground duplex. Here you have your own private lift, Schindler की lift है, and this is the private staircase going up on the ground floor. And also along with this kind of basement ground, you get this separate area. इट्स अ वेरी यूजफुल एरिया. आप इस तरह के एरिया में अगर आपके घर में कोई बाहर से आता है, यू कैन जस्ट मेक देम सिट ओवर हियर. सो प्रीटी यूजफुल एरिया. सो दिस डुप्लेक्स हैज़ मैनी यूनिक एलिमेंट्स. कनेक्टेड लिविंग किसको कहते हैं? यहाँ पे जो आप एक बालकनी की तरह का आप एक एरिया देख रहे हैं, जो एक इफेक्ट देख रहे हैं, तो यहाँ से आप इजीली आप बेसमेंट के अंदर भी देख सकते हैं. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ कनेक्टेड लिविंग जिसमें कि बेसमेंट, स्टिल्ट का जो एरिया जो साथ में ही अटैच होता है और ग्राउंड फ्लोर, तीनों एक तरह से कनेक्टेड है. Now we have already seen the entrance. Now let's see the ground floor. By the way, जो इस basement ground duplex की जो जान है, जो heart है, that's the basement. But firstly, we'll see the ground floor. So very modernly designed staircase. Now on the ground floor also, you have this again the same balcony effect. जहाँ से आप अपना एक डबल हाइट मिलती है, आप मेन डोर देख सकते हैं, कौन आपके घर के अंदर एंटर कर रहा है उसको देख सकते हैं. You have get this such as this wider foyer over here. So जब कोई आपके घर के अंदर एंटर करता है, एक काफ़ी ओपननेस वाली फीलिंग आती है. Such an amazing layout on the ground floor. The builder has also given this spacious, much sought after, much required पूजा रूम. काफ़ी अच्छे साइज़ का पूजा रूम है. इनफैक्ट ये मेटल के डोर्स और फ्लूटेड ग्लास को यूज़ करके एक काफ़ी एलिगेंट पूजा रूम यहाँ पे डिज़ाइन किया है. ऑल द एयर कंडीशनिंग जो यूज़ हुई है वो डाइकिन की VRV एयर कंडीशनिंग है यहाँ पे. ऑल्सो here we have this amazing contemporary design, a boutique kind of powder room over here, and in this powder room it has this single piece जो stone की finish के अंदर ये sink है, hanging tap over here. So very elegantly designed powder bathroom. Now this is the main drawing room on the ground floor. You get much bigger drawing room in the basement. So normally जो इस तरह के basement ground duplex लेते हैं, वो ground floor के drawing room को एक informal lounge की तरह यूज़ करते हैं और अपना main drawing room जो much bigger drawing room है basement में यूज़ करते हैं. But again, nevertheless, this is a very decently sized, a very good size living room area on the ground floor. It's a modern contemporary construction.
So good use of these big aluminum finished doors over here that brings a lot of ventilation in the living room. A good spacious balcony. Just look at the size of the balcony. Such a wider balcony, and it's a semi-covered balcony. You can use it in any weather. और ग्राउंड फ्लोर को वैसे भी सबसे बड़ी बालकनी मिलती है, सो मच रिक्वायर्ड गुड साइज बालकनी. As this property has been built by a super branded and reputed builder, Metro Buildtech, so they are into contemporary construction. They have tried to utilize or give maximum air and natural light in the apartment. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं a good use of they have given these large sliding windows over here that brings a lot of natural light and ventilation in the house. What an amazing kitchen. जो कलर सिलेक्शन यूज़ हुआ है मैट फिनिश में, काफ़ी ब्यूटीफुल किचन लग रही है, काफ़ी थॉटफुल कलर प्लानिंग है. जो काउंटर टॉप पे स्टोन यूज़ हुआ है, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कलर सिलेक्शन एंड अ वेरी हाई एंड मॉडर्न होम. डाइकिन की एयर कंडीशनिंग इवन किचन के अंदर भी है. सो wherever you see, every square feet has been designed very thoughtfully. जितने भी appliances हैं Bosch के high end appliances हैं, so it has this chimney hob over here, a microwave oven by Bosch, and the dirty kitchen has been segregated. So आपके घर में कोई ड्राइंग रूम में कोई बैठा हुआ है या कोई फॉयर से पास कर रहा है, so जो dirty utensils हैं वो यहाँ से नहीं दिखेंगे. So good size kitchen, good planning. And this is the area that has been given for the fridge. काफ़ी अच्छा साइज दिया हुआ है. इनफैक्ट एक जो वाटर का कनेक्शन का पॉइंट भी दिया, बिकॉज आजकल किसी फ्रिज के अंदर यू नीड अ वाटर कनेक्शन फॉर द आइस क्यूब्स एंड द फ्रेश कोल्ड वाटर सप्लाई. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट बेडरूम. सो अ गुड साइज बेडरूम, स्पेशियस लेआउट है. जो वुडन फ्लोरिंग का सिलेक्शन है, जो कलर सिलेक्शन है वो मैट फिनिश के अंदर काफ़ी अच्छा लग रहा है. ब्यूटीफुल सिलेक्शन एंड अगेन बीइंग अ कंटेम्प्रेरी कंस्ट्रक्शन, काफ़ी बड़ी विंडो है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा एक यहाँ पे नेचुरल लाइट के लिए प्रोविजन छोड़ा हुआ है. एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ से एक बालकनी का कनेक्शन भी आपको मिलता है इस बेडरूम के साथ. डाइकिन की सारी VRV एयर. व्हाट एन अमेजिंग बाथरूम. जस्ट 3 डोर का गुड साइज क्लॉजेट एरिया है, एक वॉक इन क्लॉजेट है यहाँ पे. एंड दिस इज़ द लग्जरी बाथरूम. Metro Buildtech is known for its different finishing elements. So आप जो इस मिरर की शेप दे सकते हैं, काफ़ी यूनिक शेप है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. जितनी भी फिटिंग्स हैं वो सारी कोलर की हाई एंड सुपर हाई एंड फिटिंग्स हैं. इनफैक्ट यहाँ पे एक फ्लूटेड पैटर्न को यूज़ करके काफ़ी मॉडर्न और एलिगेंट लग रहा है. दैट्स द एरिया फॉर WC एंड अ वेरी स्पेशियस शॉवर क्यूबिकल. यहाँ पे एक सिटिंग लेज भी बना हुआ है एंड ऑल्सो there is a single point steam system, so one can just press a button and this shower would be converted into a steam shower. Here they have created this very useful space, a semi-lounge kind of space where one can just keep some sofa, one can keep, create some sitting over here, and there's also a TV point over here. Now let's see the second bedroom. So being a 500 square yard, all the bedrooms are really good size. In fact, this is the smallest bedroom of this property, but still it has this own balcony over here, a private balcony only for this bedroom. जो stone selection है, एक बेज ग्रेइश बेज के अंदर काफ़ी अच्छा स्टोन सिलेक्शन है. और जो स्टोन सिलेक्शन के अलावा जो फिनिशिंग है, जो पॉलिश की फिनिशिंग है, दैट इज़ टू द नेक्स्ट लेवल. इट्स लुकिंग रियली रियली नाइस. लेट्स सी द बाथरूम अटैच विद द सेकंड बेडरूम. सो दिस इज़ द बाथरूम दैट इज़ अटैच्ड. अगेन गुड साइज बाथरूम. इवन इस बाथरूम के अंदर फ्लूटेड ग्लास को यूज़ करके वॉक इन क्लॉजेट क्रिएट किया हुआ है. सो यू हैव नो स्टोरेज इन द बेडरूम, बट यू हैव दिस वॉक इन क्लॉजेट इन दिस बाथरूम. Over here, very elegantly designed looking glass mirror over here, and beautiful fittings by Kohler. Good vanity over here. That's the WC area. Again, एक बड़े अच्छे साइज का shower cubicle जिसमें अलग-अलग niches create किए हुए हैं where you can store your bathroom essentials.
नाउ दिस इज़ द थर्ड बेडरूम। हर बेडरूम अच्छे साइज़ का है, बालकनीज अटैच्ड है। सो इस बेडरूम के साथ भी रियर साइड पे ये बालकनी है जो अटैच्ड है। एंड हेयर यू गेट अ 3 door closet। अनदर यूनिक एलिमेंट अबाउट दिस बिल्डर इज़ दैट इन एवरी बेडरूम जो वार्डरोब्स के जो शटर्स हैं वो रिपीट नहीं होते। सो आपको कुछ ना कुछ यूनिक एलिमेंट देखने को मिलेगा। हर बेडरूम के अंदर आपको डिफरेंट तरह का वार्डरोब मिलेगा। नाउ लेट्स सी द बाथरूम। So this is my favorite bathroom of this property, of this ground floor specifically. जो स्टोन सिलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। एक यूरोपियन स्टोन है बट एक पेस्टल शेड के अंदर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर, यू नो, आई बीन वर्किंग सिंस लास्ट 20 years, बट पहली बार मैंने ऐसा स्टोन यूज़ करते हुए देखा है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सटल टोन के अंदर अच्छा लग रहा है। कूलर की फिटिंग्स हैं अगेन वेरी ब्यूटीफुल, थीम को मैच करते हुए। अगर पेस्टल शेड यूज़ हुआ है तो उसी थीम को कंटिन्यू करते हुए जो वैनिटी है काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है। दैट्स द एरिया फॉर योर WC एंड अ वेरी स्पेशियस shower cubicle. The same stone is continuing everywhere, so there are no tiles that have been used, only the stones have been used over here. So this is the fourth bedroom. In fact, we can also say that this is the primary bedroom. आजकल एक नया वर्ड काफ़ी चल रहा है, primary bedroom और the master bedroom. Very, very spacious bedroom. Good size layout. It has this 2 door closet over here, a balcony access. Now let's see the master bathroom, the grand bathroom of this 4 bedrooms property. So as we enter in this bathroom, फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइज़ है वो कमाल है। इतना बड़ा बाथरूम, नॉर्मली इतना बड़ा तो बेडरूम होता है जितना बड़ा ये बाथरूम है। सो यू हैव दिस फुल वॉल टू वॉल वॉक इन क्लॉजेट इन द बाथरूम इटसेल्फ। जो शटर्स हैं वो ट्रूली डिज़ाइनर शटर्स यूज़ हुए हैं कर्व के अंदर और फ्लूटेड लाइंस को यूज़ करके। इवन जो इस वार्डरोब की जो विड्थ है दैट इज़ एक्स्ट्रा ह्यूज, एक्स्ट्रा लार्ज, सो जिससे कि काफ़ी स्टोरेज स्पेस मिलता है आपको। ऑल्सो इन दिस बाथरूम यू गेट दिस फुल लाइफ साइज्ड लुकिंग ग्लास मिरर एंड WC का एरिया यहाँ पे है। जो वैनिटी का भी एरिया है वो क्रैम्प नहीं है। इट्स अ वेरी स्पेशियस एंड अ वेरी डिज़ाइनर काइंड ऑफ वैनिटी। सेम थीम को कंटिन्यू करते हुए फ्लूटेड लाइंस और कर्व्स को यूज़ करते हुए काफ़ी ब्यूटीफुली डिज़ाइन वैनिटी है। लुकिंग ग्लास मिरर जो आप देख रहे हैं, गुड साइज लुकिंग ग्लास मिरर। इनफैक्ट ये ब्रास फिनिश के अंदर यहाँ पे कूलर की जो फिटिंग्स यूज हुई हैं दैट इज़ ट्रूली सूटिंग द इंटीरियर्स ऑफ दिस बाथरूम। सो this is the shower cubicle, a good size closable shower cubicle over here, and you also get this standalone jacuzzi in this bathroom, in the master bathroom. Now it's time to see the heart of this basement ground duplex, the lavish, the palatial basement. So as we enter the basement, we have this oversized feature wall. एक stone को use करके काफ़ी elegant लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे. Even जो staircase है वो काफ़ी अच्छी design करी हुई है. It has this inbuilt light also. That's giving a good look. Now this is the space where you can create your extra drawing room. So इस तरह के डुप्लेक्स जो भी लेते हैं वो अपना मेन ड्राइंग रूम बेसमेंट के अंदर ही बना लेते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग रूम है उसको एक इनफॉर्मल लाउंज की तरह यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द नाइसिएस्ट एंड मोस्ट अमेजिंगली डिज़ाइन बेसमेंट वी हैव एवर सीन इन साउथ दिल्ली. साइज़ अमेजिंग है, जो हाइट है दैट्स ऑलमोस्ट लाइक 13-14 फीट, जिससे कि काफ़ी बड़ी ये फील हो रही है. इट
also has this sunken courtyard over here. So through this sunken courtyard, you can just open these windows and a lot of natural light and air flows in the basement. So it doesn't almost feel कि आप एक basement के अंदर हैं. And काफ़ी अच्छा ये open sit out यहाँ पे create किया हुआ है. In fact, Metro Buildtech is one of the builder जिन्होंने start किया था ये sunken courtyard का concept. Over here you have your lift landing area in the basement. Now let's see the highlight of this basement, the private swimming pool. That's right guys, जो फीचर आपको एक फार्म हाउस के अंदर मिलता था वो आपको इस तरह के बेसमेंट ग्राउंड डुप्लेक्स में भी मिल सकता है. योर ओन प्राइवेट स्विमिंग पूल. ओवर हियर यू हैव दिस सिंगल पॉइंट फिल्ट्रेशन सिस्टम जिससे कि इस पूल को मेंटेन करना काफ़ी इजी रहता है. नाउ लुक एट द साइज ऑफ दिस पूल, डिज़ाइन इन अ एल शेप्ड मैनर, जिससे कि काफ़ी अच्छे साइज़ का ये पूल है यहाँ पे. सो अ वेरी यूनिक फीचर इफ़ यू बाय अ डुप्लेक्स लाइक दिस. इवन जो फ्लोरिंग यूज़ हुई है वो एंटी स्किड फ्लोरिंग है, सो वेरी थॉटफुली डिज़ाइन. इट ऑल्सो हैज़ दिस एरिया अलॉन्ग विद द पूल जो कि बेडिंग एरिया भी कह सकते हैं, चेंजिंग एरिया भी कह सकते हैं. एक इनफैक्ट एक सिटिंग लेज भी यहाँ पे क्रिएट करी हुई है. So a very practically designed basement ground duplex. In the basement, you also get a good size powder bathroom over here, a pantry also, and this is another separate segregated area. काफ़ी बड़े size का area है. आप इसको किसी भी तरह से use कर सकते हैं. You know, you can keep your billiards, you can keep your table tennis table over here, or even create a home theater, a gym. So इस तरह के duplex के जो uses हैं, they are endless. So every square foot of this basement is designed. कि एक randomly hall नहीं create कर दिया, बड़ा thoughtfully designed basement ground duplex है. I hope you've liked the property video tour shown by Team South Delhi Floors. So if you want to buy a basement ground duplex by the same builder, this kind of duplex, just call at the given number. And meanwhile, don't forget to like, share and subscribe South Delhi Floors for many more properties like this. Signing off till next time.